So this is the third part of the question number 30 from 2023 midterm English session paper, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, you need to list down the modules required for the working on text file, binary file and CSV file. तो अगर मैं बात करूं टेक्स्ट फाइल की, फॉर दैट वी हैव IO मॉड्यूल, जिसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये क्या होता है, आपका डिफॉल्ट मोड होता है। फॉर बाइनरी फाइल वी हैव पिकल मॉड्यूल, and for CSV file we have CSV module. Now I want you to brief regarding the reading and writing functions which are available in these type of modules. तो अगर मैं बात करूं .txt फाइल की, तो उसके अंदर हमने आपको ऑलरेडी बताया IO मॉड्यूल होता है जो कि आपका डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है। इसके अंदर आपके तीन रीडिंग फंक्शंस होते हैं, रीड लाइन एंड रीड लाइन। एंड फॉर राइटिंग वी हैव टू फंक्शन, राइट एंड राइट लाइन्स। ऑन द अदर एंड फॉर बाइनरी वी हैव पिकल मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, लोड फॉर रीडिंग एंड डंप फॉर राइटिंग। सिमिलरली सीएसवी फाइल के अंदर क्या है, आपका फंक्शन क्या हो गया, मॉड्यूल क्या है सीएसवी, और रीडिंग के लिए वी हैव रीडर एंड राइटिंग के लिए वी हैव राइटर फंक्शन। अब राइटर फंक्शन क्या करता है, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से आप दो अनदर फंक्शन है जो राइट रो एंड राइट रोस उनको यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि क्या कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के लिए और कौन कौन से उसके रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शंस हैं। Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.